दोस्तों नमस्कार। सरकारी टेल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री जैसा कि राम। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में एक सुनहरा तारीख है। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। उनके साथ कई गणमान्य विशेष अतिथि भी रहे। पर एक तिथि है जिसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। ये तिथि है 21 जनवरी 2024। 7 समुंदर दूर एक भारतीय ने 2 साल पहले सोचा कि एक राम मंदिर होना चाहिए, और उसकी यह यात्रा इस साल 21 जनवरी को उजागर हुई। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि जुड़ रहे हैं मेक्सिको से। एक भारतीय हैं, एक अमेरिकन हैं, और 2 मेक्सिकन नागरिक हैं। तो आइए आज जानते हैं, समझते हैं कि भारत से 7 समुंदर दूर एक मंदिर की स्थापना हुई, श्री राम मंदिर की स्थापना हुई। और इन्हीं सब विषयों से आपको आज अवगत कराएंगे। आज हमारे साथ मेक्सिको से 3 विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा सतीश कुमार कुंथा जी, जो क्यूरो मेक्सिको में रहते हैं। पिछले 12 साल से वो मेक्सिको में रहते हैं, और पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टीसीएस के साथ काम करते हैं। और हमारे साथ कुछ बहुत ही विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। श्री नरेन जी, जो एक अमेरिकन है, वो पुजारी हैं। फिर हमारे साथ पैब्लो जी जुड़ रहे हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है। और एक मारिसेला जी हैं, जो भी एक मेक्सिकन नागरिक हैं, और राम मंदिर की स्थापना को लेकर इन सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस चर्चा में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सतीश जी से। तो सतीश जी, आप बताइए ये कैसे शुरुआत हुई और ये राम मंदिर की स्थापना कैसे हुई। चलो, पहले जय श्री राम सबके लिए। जय श्री एंड आपका धन्यवाद है, आपने हमें इस मंच पे बुलाया है। आ, मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा, इनके समटाइम्स मुझे तो शब्द मुश्किल होगा, क्योंकि अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए इंडिया से बाहर आके। तो कभी 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 शायद कभी शब्द मिस हो जाते हैं, हमको फ्लो नहीं मिलेगा, तो आई विल स्विच ओवर इन इंग्लिश। लेकिन मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में बोलूं आपके लिए। जरूर। ये एक सपना था। 12 साल हो गए इंडिया में जब हम लोग थे, हम लोग का आदत है कि हर महीने हम मंदिर जाते हैं, और हर विशेष कार्य के लिए हम मंदिर जाते हैं। यहाँ पे वो मुश्किल था। तो पहले 2 साल जब मैं मेक्सिको सिटी में था, वहां पे एक इस्कॉन टेम्पल, तो हम हर महीने वहां जाया करते थे। बाद में हम पहुंचे कि केरतारो, जो कि 300 किलोमीटर दूरी पर है मेक्सिको सिटी से। यहाँ पे एक मंदिर नहीं है, एक भी मंदिर नहीं। तो हम कुछ प्रॉब्लम से लग रहा था कि हम बाहर हैं, हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। घर में तो रोज करते हैं, लेकिन बाहर जब हम एक संघ के साथ बैठे हैं और दोस्तों के साथ बैठे हैं, हमको एक मंदिर चाहिए जहाँ पे हम शांति से बैठ के मेडिटेट कर सकें। तो 2 साल से अब जब मैं 10 साल पहले आया था, यहाँ पे लोग बहुत कम थे। हम लोग सिर्फ 70-80 लोग थे। बढ़ने लगे। अब फिर 2 साल पहले जब मैंने देखा था, हम लोग तकरीबन 300 लोग थे। तो मन में ख्याल आया क्यों ना हमारे पास एक मंदिर हो। 300 लोग तो मतलब अच्छे नंबर है, ताकि हमको एक मंदिर बनाना चाहिए। तो मैं अलग अलग लोगों से जुड़ रहा था, पूछ रहा था कि हम क्या करें, हमको एक मंदिर बनाना है, हम कैसे कर सकते हैं। फिर सभी ने बोला कि अच्छा सा आइडिया है, करते हैं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन करेंगे, साथ में बैठ के करेंगे। तो ये चलता रहा 2 साल तक। कुछ बढ़ा नहीं आगे।
फिर बीच में हमको नरेंद्र जी मिल गए। नरेंद्र जी का एक पोस्ट आया था फेसबुक में कि हनुमान जयंती चल रहा है, हनुमान रिट्रीट होता है। तो मैं सरप्राइज हो गया था कि केरतारा में हम लोग 300 लोग हैं और यहाँ पे मंदिर नहीं है, और ये इनका जो है अमेलको में है, जो तकरीबन 1 घंटे दूर से है यहाँ पे। वहां पे मंदिर कैसे बना? तो मैं उनसे जुड़ा, उनसे बात किया। तब समझ में आया कि पाब्लो जी, मार्सेला जी, उन्होंने मतलब प्रेरणा लिया है अपने इंडियन कल्चर से, और वो इंडिया गए हैं। इंडिया जाके पूरा एक्सप्लोर करके नरेंद्र जी अडॉप्ट कर लिए थे, मतलब पहले से पेशे में पुजारी बने थे, और पाब्लो जी ने अडॉप्ट कर लिया अपना हिंदू कल्चर, और उनका एक अपना खुद का हनुमान टेम्पल है। तो तब से हम जुड़ गए। देन अपना विश और ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो गया कि अब हमको भी मंदिर बनाना ही है। और यही सोचते सोचते अभी फिर ये 22 का जो डेट था, इतिहास में मतलब इट वाज क्रिएटिंग हिस्ट्री इन इंडिया। और यहाँ पे कुछ दोस्त थे हमारे जिन्होंने हमको बताया कि हम भी भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो मेरे मन में ये आया कि भजन कीर्तन तो सब जगह पे होगा होगा, हम क्यों ना कुछ अलग करें। और जो हमारे 2 साल से मन में था कि मंदिर बने, हम क्यों ना मंदिर बनाएं। तो उस रात्रि मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मंदिर कैसे बनाएं। मंदिर बनाना है लेकिन टाइम नहीं है, हमें हेल्प का जरूरत है लोगों से। तो मैंने क्या किया था, रात रात भर सोच रहा था कि मुझे करना क्या है। अगर मैं इंडिया से एक आइडल मंगाता हूँ तो लेके कैसे आऊँ? 2 हफ्ते में तो बहुत ही मुश्किल होगा। फिर मैंने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप में हमारा जान पहचान के आदमी है, कल्चरल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अभिनव राज। ही इज अ कल्चरल डायरेक्टर फॉर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप इन एम्बेसी। सो आई सेंट हिम अ मैसेज। मैंने उनको एक मैसेज किया, मैंने बोला मुझे रात भर नींद नहीं आई बिकॉज मुझे मंदिर बनाना है, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आइडल्स लेके आना है, और कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं एम्बेसी से बात करूंगा और मैं आपको सहायता का ट्राई आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मैं हेल्प यू आउट। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एम्बेसी से एम्बेसडर से बात किया, और दोनों ने कहा कि हम जरूर सहायता करेंगे आपका इस प्लान में। फॉर्चुनेटली क्या हुआ था, नरेन जी इज ए यूएस सिटीजन। वो साल में 3-4 बार आते हैं मेक्सिको, एंड ही वाज आल्सो प्लानिंग टू कम टू मेक्सिको ऑन द राइट टाइम। And then we thought ki, what else can be the right option for us, ki we have the day which is an auspicious day. Nareji, who is our extended family, he knows all kind of pujas, तो क्यों ना हम प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन कर लें। फिर हमने बात की नरेंद्र जी से, नरेंद्र जी को पूछा, नरेंद्र जी आप पूजा कर सकते हैं उस दिन, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, आपको हनुमान मंदिर में भी रहना है, लेकिन उस दिन अगर आप यहाँ पे आके किरतौरा के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने तुरंत कहा कि डेफिनेटली हम करेंगे, कि हनुमान जी मतलब राम जी की भक्त हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे। फिर हमने ऑर्डर किया हमने, लेकिन उस दिन उसके बाद ना 2-4 दिन अभिनव जी नहीं सो पाए, बिकॉज उन्होंने ये मूर्तियों को ढूंढना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने जान पहचान वालों को बुला के दिल्ली में बोला कि हमको राम मंदिर का मूर्ति चाहिए, सीता माता का मूर्ति चाहिए, लक्ष्मण जी का मूर्ति चाहिए, हनुमान जी का पूरा एक सेट चाहिए। फिर उन्होंने 2-3 दिन अपने फैमिली मेंबर्स को भेजा, हर जगह पे ढूंढा, फिर फाइनली एक फोटो भेजा हमको कि इतने से मूर्तियों में से आप चुन लो। हमने नरेंद्र जी को भी दिखाया, तो नरेंद्र जी हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नरेंद्र जी बोले कि अच्छा है, इसको शुरू कर लेते हैं। तो 10 दिन में ये सब कुछ हो गया था। 10 दिन के अंदर हमको डेट हमारा था कि 21st को करें। 21st को आफ्टरनून में था, नरेंद्र जी ने टाइम दिया था कि 2 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक, बिटवीन 2 o'clock to 3:30, 21st ऑस्पिशियस आफ्टरनून टाइम। इज द राइट टाइम फॉर अस टू डू द पूजा। तो हमने सोचा कि 21st यहाँ पे जो होता है तो ऑलरेडी इंडिया में 22nd हो जाता है, तो इट इज द राइट टाइम फॉर अस टू डू इट ऑल टुगेदर। तो हमने बोला कि ठीक है हम करेंगे। एग्जैक्टली 2 दिन पहले मूर्ति मेक्सिको पहुंचा। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। हमने बोला कि ठीक है हम कर लेते हैं 2 दिन के अंदर। हमने थोड़े लोगों को मैसेज किया, एम्बेसी को मैसेज किया कि आप प्लीज आइएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेक्सिको प्रेसिडेंट
ज्योति जी है, उनको भी हमने मैसेज किया, बुलाए थे। और एम्बेसडर सर डॉक्टर पंकज शर्मा जी वाज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हम 2 दिन के अंदर हमारा न्योता एक्सेप्ट करके ही सेड ही विल कम अलोंग विद सम डेलीगेट्स फ्रॉम एम्बेसी। और हमारे कुछ खास दोस्त हैं, हरीश, हर्षल, शिशिर का, रविंदर, प्रवीण एंड ये सब मिलके सहायता की डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि मंदिर तो ऐसे नहीं बनता है, तो हमको अच्छा सा डेकोरेट भी करना था। तो 2 दिन में हमने पूरा डेकोरेट कर दिया था। और नरेंद्र जी ने आके उस दिन अपना मतलब एकदम प्रॉपर इंडियन वे से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया था। सो इट वाज एन ऑस्पिशियस डे। फिर हमने वॉलंटियर्स को भी पूछा था कि इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग सम काइंड ऑफ प्रसाद व्हिच कैन बी डोनेटेड। तकरीबन 200 225 लोग आए थे इंडियन कम्युनिटी। वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ अराउंड लाइक 550 प्लस या 600 लोग हैं गिरतारो में। 600 लोगों में इट वाज अ लास्ट मिनट आस्क, क्योंकि वो एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो बहुत से लोग बाहर गए थे। तो जो नहीं पा मतलब जो आ नहीं पा सके मतलब दे कुडंट कम। और 225 लोग तो मतलब तुरंत आ गए थे, और उनको खाना देना भी मुश्किल था। तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स भी थे, उन्होंने सहायता किया कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे, वो प्रसाद को हम महाप्रसाद की तरह सबको बांटेंगे। So now let me switch over to English a little bit. So on 21st, it was a very auspicious day. The entire planning happened in 14 days. We had nothing, but within that 14 days, we managed to get our idols. Thanks to Abhinav ji for that. Thanks to Maricela ji and Pablo ji for giving us a place where we could do the Pran Pratishta. Without them, this was never possible. And special thanks to Naren ji for making it happen. He came all the way from US only to make sure, जैसे हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे लिए हमारे नरेंद्र जी है। So we had our own Naren ji here who did it for us, Pran Pratishtha. So it was a very auspicious day. It was full of devotion, lots of positive vibes we got that day. The puja went for almost 1.5 hours. Pran Pratishtha was a grand success with a complete collaboration of American priest in the land of Mexico, sponsored by Mexican and lots of Indian devotees. We had lots of prasad that was also distributed to all the devotees. Then we had some kirtans, bhajan. So it was kind of a very auspicious day for entire Mexico, I would say. And that's how हमारा पहला Ram Mandir in Mexico, which we named as Sanatana Dharma Mandir. So that is how we started. सतीश जी, ये तो मतलब सचमुच में अद्भुत आपका आपने जो पूरी कहानी सुनाई, ये किस तरीके से हुआ, ये सुन के ही बड़ा अद्भुत लगा। और एक एक बात कहूँ तो एक नरेंद्र जी ने प्राण प्रतिष्ठा करी और एक नरेंद्र ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। Exactly. That's exactly what I was saying. In India, we had Narenji, Narendra Modi ji, and here we have our own Narenji. जी। So both Narenjis have created history in the world of having Ram Mandir. One in India, one in Mexico. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम बात करते हैं नरेंद्र जी जो एक अमेरिकन नागरिक हैं, और इन्होंने पुजारी की पूरी जो एक विधि होती है, जो हम ट्रेनिंग कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस मठ से ली है। भारत में आए कुछ दिनों के लिए, यहाँ पे पूरा विधिवत उन्होंने पूरा जो भी पूजा करते हैं या पुजारी की जो भी अ, तरीका होता है सीखने का, वो यहाँ पे उन्होंने सीखा और फिर वापस जाके उसको अपनाया भी। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और Narenji, most welcome. A warm welcome. नमस्कार। हमें धन्यवाद। हमें सुन के ही बहुत अच्छा लगता है कि एक अमेरिकन पुजारी ने मेक्सिको में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप ये बताएं, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने इंडियन कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया, See, ठीक है, क्या मैं आप Narenji, इस चीज से प्रभावित हैं? थोड़ी थोड़ी Narenji, हिंदी just जानता हूँ। आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश।
Forgive me, but I'm still learning Hindi and Bangla. Also, my inspiration also is Paramahansa Yogananda, who came to the United States in 1920. And not many people know that he also came to Mexico in 1929, probably the first sannyasi to come to Mexico. And he loved Mexico very much. He said Mexico reminded him of India. So you can imagine 1929, America, very different. But this great Mahatma, he went to Mexico and said, oh, the people remind me of Bharat, the love, the family, the culture. And Swami Vivekananda ji, he is the greatest Narendra, right, for all of us. He also left Bharat. He left his homeland to come to foreign places. So I think that inspiration of how does Sanatan Dharma, how does Bharat leave India and go to other places? It's something that is a new experience, I would say, only in the recent 100 or 200 years. So in that, with that great blessing, that great Shakti of these Mahatmas, I feel that we are riding that wave. We are in that blessing, that Ashirvad, that we feel everything here. And since a young age, my heart had always been called to Bharat, to Sanatan Dharma. And because of the generosity of so many gurus and acharyas, sadhus, rishis, they have made it available to someone like me, even in English. And because of that universal grace, I would say, of Swami Vivekananda ji Maharaj and Paramahansa Yogananda ji and others, someone like me was able to learn, to receive Diksha, to be welcomed into the grace of Sanatan Dharma. And being very close to India, because I'm in California, it was 10 years ago that I was invited to Mexico by Pablo ji and Marisela ji to inaugurate a new center they had built for yoga and for retreat and other things. And I remember specifically one day after that, we had the morning meditation, we had some yoga asanas, some dhyan. I felt like I wanted to chant Hanuman Chalisa. So I sang Hanuman Chalisa, and I remember seeing the tears of devotion coming down from the face of Marisela ji, Pablo ji. And I thought, what kind of grace is this? No, this is like some Divya Kripa, some grace has filled our hearts. Because how can we say, how do we receive bhakti and shraddha? How does it come? Only from grace. And to see that they felt that. So over the years, more of that began to grow, and they asked me, do you think it's possible? Can we have Hanumanji here? I said, this is a big responsibility, but Hanumanji answers the call of bhakti. He will support the devotees. So some years ago, we began. Also with the help of one of our dear friends, Lopamudra Bose. She's from Kolkata, but she lives there. She helped design the mandir for Hanumanji and the Vigraha and everything. And eventually we did Pram Pratishta, and Hanumanji came to Mexico. And I want to say one thing that was very special on that occasion. I remember after that moment, it was with Pablo ji and Marisela ji, and they said, Hanuman was born in Bharat. He was born in India, but the whole planet, the whole earth is his own land. Meaning he can go anywhere he wants to. And for some reason, he chose to come and bless
us here in Mexico. And then we realized, well, you know, where there's Hanumanji, there has to be Ramji, Shri Ram, Sita Devi, Lakshmanji. So when Satish ji called me and said, this is what we are hoping to have happen, this Sankalpa, that maybe Ramji and Sita Devi and all will come, can we do it? So we felt great blessing that Hanumanji said, it will happen. Durgama kaj jagate ke jete, sugam anugraha tumhare tete. Anything was possible with Hanumanji. Narenji, it was excellent hearing to you. I'd like now Pablo ji and Marisela ji to share their experiences first. I think let's have the lady first. Okay. Dice que primero pregunta Marisela, cuenta un poco de tu experiencia con Hanumanji, con Ram aquí. Me siento profundamente bendecida por el camino que se me ha ido mostrando a través de la divinidad y obviamente, de nuestros grandes maestros como ha sido Naren y Narenji y Lopamudraji. Creo que cuando iniciamos el camino de yoga, y tuve la oportunidad de ir a la India hace 16 años, creo. Hanuman hizo su primera llamada hacia mi corazón. En esa ocasión yo tomé un libro sobre la historia de Hanuman y creo que ahí empezó esta oportunidad de vida de conocerlo. Hanuman para mí ha sido fuente de inspiración, una gran fuente de inspiración por invitar a ser el devoto perfecto. Si bien estoy muy lejos de ser ese devoto perfecto, es indudablemente mi fuente de inspiración y de profundo amor. Siento yo que este camino tan hermoso que se ha ido abriendo de una forma muy inesperada, pero muy bendecida, es un camino de mucho crecimiento personal. Por hacer más, todavía más bendecido, más bendecida mi vida y la de mi familia, por darnos la oportunidad de recibir a Rama en nuestros hogares, en nuestros hogares, porque bueno, está en México ahora y en nuestro corazón. Muy agradecida y muy bendecida. We owe them a lot. We all are extended family. You all are a family. We are one family, and without your help, this was never happening. And I owe you a lot. It's not that you have to bless. I owe you a lot. Be it any religion, any language, the goal is always one. True. And Sameji, Ameji, Marisela ji, Pablo ji, Naren ji, they are our extended family. They are so down to earth, right? They consider everybody. If even one person wants to go to visit the temple, Hanumanji's temple is around 1.5 hours from the place where they live. उनका almost 1.5 घंटे का जर्नी है, लेकिन जब भी कोई आकर उनको मैसेज करता है कि वीकेंड में मुझे हनुमान मंदिर जाना है, तो एक आदमी भी जाएंगे, तो ये लोग यहाँ से ड्राइव करके नहीं, मना कभी नहीं करेंगे. तो लोग इतने मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं. वो चाहते हैं, दरवाजा खोलते हैं उनके लिए, पूरा पूजा पाठ करने के बाद वापस बैठ के थोड़ी देर हम बैठ के वापस आते हैं. So I was just telling them that even 1.5 hours drive from this place that Hanuman temple has. So one family says that they have to go. Pablo ji, Marcela ji drives all the way from here to Hanuman temple, open the door for us. So we are so blessed to have you with us as our extended family. Thank you, Satish ji. It's now the turn of our friend
Pablo. Pablo. Ola from India. I would like you to share your experience, please. Sí, desde el principio de la experiencia de haber abierto el centro Hamadi, nunca ha habido nunca he sabido, y a hoy tampoco, qué es lo que iba a provocar en mi vida y lo que iba a provocar en la comunidad de, de México, y sobre todo mucho menos la relación que hoy en día tenemos con nuestros hermanos de la India. He said that when he began the construction of this new center, that more than 10 years ago, he never had an idea or a vision of what would happen in the future, especially within the Mexican community, all of the people that it would affect, and his own life, and even now with the brothers and sisters of India who live here in Mexico. Y lo poco que puedo comprender en este momento es que realmente es un plan que mi mente no puede comprender, pero mi corazón sabe que es el plan más importante que he realizado en mi vida, ¿no? He said, even though my mind cannot fully comprehend what this great plan is, my heart knows that this accomplishment, this plan, has been the most important of my life. Y celebro actualmente el camino que se ha abierto con nuestros hermanos de la India, y el poder contribuir y que me den la oportunidad de colaborar en todo lo que tiene que ver con lo más hermoso que tiene la India, que es la filosofía del amor y la libertad. And it has been a great blessing to be able to open up these new relationships with our brothers and sisters from India, because moving forward, we share together one of the most beautiful gifts that India has to offer, and that is the spiritual teachings and philosophies and way of life, which now we can help support and collaborate with the Indian community here. Y lo que sé que lo que viene es lo que le puede dar más sentido y propósito a mi existencia, y eso lo celebro y aprovecho la oportunidad para agradecer a Satish, que se haya que haya abierto las puertas completamente para poder colaborar, y nosotros nos sentimos muy bendecidos el que nos den la oportunidad de ayudar a todo lo que la comunidad de India está haciendo aquí en Querétaro, en México. And grateful for Satish to also be a part of this new relationship that we have with the Indian community here in Querétaro, and to be able to support this spiritual life of not only the Indian community, but of our own lives and of the other devotees in Mexico, has given me a sense of purpose, a very divine purpose in life. Thank you, Babloji. Narenji, I would, before we end our program today, I would like you to, for all our Indians, brothers, sisters from India and from all around the world, if you could chant some mantras or shlokas for us, you know. Yes, it will be a great honor. And I want to say, Amayaji, that that day when we were all doing the puja, 200 Bharatiyas came together in Mexico from all different states, you know, Maharashtrians, Rajasthanis, Tamils, Bengalis, Punjabis, everybody. So much tears of joy, so many smiles of happiness, also for what was happening in Ayodhya Dham with Ram Lalla ji. I felt such joy, and this thought came into my mind that the Pran Pratistha of Ramji was happening in everyone's hearts, all over the world, the whole diaspora.
and within India. And it was a great joy and great privilege and honor to be a part of that experience. So I'm very grateful for that, and will always remember. And I will offer a small prayer for Ramji. Let's, fold hands. Yes. Om apadam apahartaram dataram sarvasampadam lokabhiram Sri Ramam bhuyo bhuyo namamyaham Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha Manojavam Marutatulia Vegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham Vatatmajam Vanarayuddha Mukhyam Sri Ramadutam Sharanam Prapadye Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. जय श्री राम। अमेजिंग द वे उच्चारण होता है एक एक शब्द का, it's more like an Indian, and the sweet voice that he has, it's kind of a melody to the ears. He will just take us to a different world when he does the kirtans, bhajans. हमको अलग दुनिया में लेके जाते हैं। नरेंद्र जी कुछ और एक हो जाए, एक हाँ, नरेंद्र जी, when you start, we can never stop. You know, we always want more. one more time, something else. We can say together. You want to? Podemos cantar juntos el Tvameva Mata. Tvameva Mata cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Thank you very much. When we talk about cooperation between countries, we talk about public diplomacy. We talk about people-to-people contact. This is a perfect example. American, Mexican, and Indians coming together and creating Lord Sri Ram's temple in Mexico. And I wish I could join you one day and meet all of you in Mexico. And For sure. ये We look कार्यक्रम forward for you to join us in our temple here. बिल्कुल, ये कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं सबका धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू नरेंद्र जी, मारिसेला जी, पैब्लो जी, थैंक यू वेरी मच joining. Ameji, thanks to you for taking us live on your channel. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने you have printed an article, you have recorded the session. So I wholeheartedly want to thank you for giving us an opportunity to speak about Mexico, which is one of the best places to live. People have different perception, but I want to confirm that no, it's wrong. People they think Mexico is a very good place to live. We have so many Mexicans who are very down to earth, a place to happily live your life. And people like Pablo Ji, Marcela Ji, they wholeheartedly welcome all of us. Naren Ji, as part of family, they're our extended family. To be honest, they're extended family for all the Indian community. So on behalf of Indian diaspora, I would really want to thank Naren Ji, Pablo Ji, Marcela Ji for giving us an opportunity to have a Ram temple there. I want to extend my sincere thanks to Pankaj Sharma ji, who is our ambassador, sir. And I want to thank especially Dr. Abhinav Raj, who is from ICCR, Cultural Director, who made this dream possible. And my dear friends, Harish, Harshal, Praveen, Ravinder, Shishireka, Mukul, and lots of other Indian friends and family
who made this wonderful event happen in Mexico. Before I end this program, I would also thank the Indian Embassy in Mexico, because when I published this story about Lord Sri Ram's temple being, inaugurated in Mexico, they were very kind enough to pass on Satish ji's contact. I'll thank Mr. Shinde, who is in the embassy. Yeah. So he messaged me. He sent an email to me that you can connect with Satish ji, and then you can take it forward. Right. He's very supportive. He's second in charge, and he's always extended his support to us as well. So we receive lots of support from the embassy. So there is no doubt about it. So thank you all to all my friends from Mexico, Satish ji, Naren ji, Maricela ji, and Pablo ji. Thank you for joining on this very special program. You are all divine brothers and sisters, and I hope to see you in future again. Namaste, Jai Shri Ram, and Jai Ola Shri from Ram. India. Thank you. Thank you very Jai much, Hind. viewers. And if you like this program, do share it and like it. Thank you very much. This is Amay Sathe signing off from New Delhi, India. Thank you very much. Jai Hind. Jai Shri Ram. Jai Hanuman. Yes.